Assalamu alaikum. I am your Islamic teacher, Ms. Farhana. Today we read Surah Al-Inshirah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wazrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Translation: Have we not expanded your breast and removed from your burden, that which did weigh down your back, and raise high the esteem in which you are held? So verily, with every difficulty there is relief. Verily, with every difficulty there is relief. Therefore, when you are free from your immediate task, be steadfast, and to your Lord turn with your attention. सूरह इंशिरा आपको मैंने पढ़ के सुनाई है, आप लोग उसको याद कीजिएगा. मैं तर्जमा आपको समझा रही हूँ कि अल्लाह ताला कहता है, क्या हमने तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे सीनों को नहीं खोला, इनको नहीं खोला तुम्हारे लिए? तुम्हारे ऊपर से जो तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन था वो हमने नहीं हटाया, और जो तुम्हारे ऊपर जो वज़न डाला हुआ था, तुम्हारी पीठ पे जो वज़न था, क्या उसको हमने नहीं हटाया? और जहाँ तुम्हारी इज़्ज़तों को हमने महफूज नहीं किया, उसको नहीं बढ़ाया. इज़्ज़तें बढ़ाई भी हैं अल्लाह ताला ने हमारी, और हमारी इज़्ज़तों को महफूज भी किया. तो बेशक विद एवरी डिफ़िकल्टी देयर इज़ अ रिलीफ, कि हर मुश्किल के साथ अल्लाह ताला ने आसानी रखी है. फिर दोबारा से आया है सूरह अल-इंशिरा में 2 दफ़ा आया है, वेरिली विद एवरी डिफ़िकल्टी देयर इज़ अ रिलीफ. जहाँ पे मुश्किलें हैं, जहाँ पे परेशानियाँ हैं, वहाँ पे आसानियाँ भी हैं, वहाँ पे अल्लाह की रहमतें भी हैं. आजमाइश के साथ अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानियाँ भी रखी हैं, सुकून भी रखा है. Therefore, when you are free from immediate tasks, be steadfast. जब आप अपना काम करें जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर आजमाइश डाली है, तो आप उस काम को साबित कदमी के साथ करते रहें. एंड टू योर लॉर्ड टर्न विथ योर अटेंशन. और जब तुम अपने अल्लाह के पास लौटोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला बहुत नवाजने वाला और बहुत देने वाला है. ये सूरह अल-इंशिरा की सूरत है जिसमें 2 दफ़ा कहा गया है कि हर परेशानी के बाद आपके लिए सुकून और आराम है. अगर आपके ऊपर कोई आजमाइश आती है तो बिल्कुल भी उसमें ना घबराएं, बिल्कुल इस तरह से ना सोचें कि ये परेशानी आ गई है, अब हमारा क्या होगा. जहाँ अल्लाह ताला ने आजमाइशें, मुश्किलें, परेशानियाँ रखी हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला ने आसानियाँ भी रखी हैं. और अल्लाह ताला ने इस सूरत में 2 दफ़ा कहा है, यानी कि एक परेशानी का नाम 1 दफ़ा लिया और रिलीफ़ का नाम 2 दफ़ा लिया है. 2 दफ़ा कहा है कि बेशक जहाँ पे परेशानियाँ होती हैं वहाँ पे आसानियाँ भी देते हैं अल्लाह ताला. दूसरी सूरत है आयतुल कुर्सी, जिसका आप सबको पता है कि ये हिफाजत के लिए पढ़ी जाती है. और अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर ये 3 दफ़ा पढ़ के अपने घर पे और अपने ऊपर दम किया जाएगा तो अल्लाह ताला बीमारियों और परेशानियों से आपको महफूज रखेंगे. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नूम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम.
Allah. There is no God but He, the living, the self-sustaining, eternal. No slumber can seize Him or nor sleep. His are all things in the heavens and on earth. Who is there that can intercede in His presence except as the permit? He knows what appears to His creature as before or after or behind them, nor shall they compass aught of His knowledge except as He will. His throne extended over the heavens and the earth, and He feels no fate in guarding and preserving them, for He is the Most High, the Supreme in glory. اس کا ترجمہ ہے، آیت الکرسی کا ترجمہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی وہ اونگتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اس کی اجازت کے منتظر ہیں. He knows what appears to His creature as before and after behind them. اور اس کی مخلوق کے کیا آگے ہے ہو رہا ہے، کیا پیچھے ہو رہا ہے اور کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ سب جانتا ہے. اور کوئی بھی اس کی مخلوق کو، اس کی حکمت کو چیلنج نہیں کر سکتا. اس نے ساری دنیا آسمان اور زمین کو بنایا ہے اور اس میں چھپے ہر بات کو وہ جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. اسی کے دنیا کا چلانے والا ہی اللہ تعالیٰ ہے. وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے عظیم ہے. آیت الکرسی بیٹا سورہ بقرہ کی صورت ہے اور اس کی ایک سورہ بقرہ جو ہے اس میں سے اس آیاتوں کو لیا گیا ہے اور اس کی بڑی خیر و برکت ہے. قرآن نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد جب ہم 3 دفعہ آیت الکرسی اپنے پر دم کرتے ہیں تو یہ ہمیں شفاعت کے لیے بھی ہے، صحت و تندرستی کے لیے بھی ہے اور ہر طرح کی ناگہانی سے بچنے کے لیے بھی. سورہ آیت الکرسی جو ہے بیٹا، اس کا مطلب آپ کو میں نے سمجھایا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ دونوں صورتیں جو سورہ الانشراح اور آیت الکرسی دونوں جو ہیں وہ قرآن شریف کی جو پورا جز ہم اس کے بارے میں بول رہے ہیں تو وہ صحیح رہے گا کہ پورا جز ہے اس کے اندر سارا کا سارا قرآن شریف بیان کیا گیا ہے ان 2 صورتوں میں، جبھی یہ 2 صورتیں آپ کے کورس میں شامل کی گئی ہیں. سورہ الانشراح اور سورہ آیت الکرسی کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا، ایگزامس میں اس کا اورل ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.